Yes. So the very simple and conceptual diagram is a bar diagram, and that bar diagram is a consist of three type, usually three type. Otherwise, it has many type, but mainly we are discussing three type. The first one is simple bar diagram. The first one, we have a simple bar diagram. Now, what happens in simple bar diagram? When you talk about simple bar diagram, it represents only for one variable. So when we have one variable, like in this example, the data referring turnover of a company. So turnover of a company. This is a turnover. Maybe turnover regarding that any materials or any productions like that during 6 years. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 years ka data we have given, and we are representing that turnover with reference to year. Okay, with a reference to year. So when we have a one variable, we can always go by simple bar diagram. So what did it represent? For example, we have the figures of I can say production, sales, population, birth rate, death rate. We use always simple bar diagram. So whenever we have given single variable among this, one can go with the simple bar diagram. Here one can construct vertical bar of uniform width and height proportional to the value of the variable. So, like this. Okay, and the thing is that diagrams is not given here. Okay, so we need to understand the what concept is. So, if we have a data like it's type of bar, okay, so we must have vertical bar having same width and same, I will say, height according to the value. So this height may vary. This height may vary. Okay. So if I'm saying like this, if I'm saying like this, so here one can say, let's say this is 2004, say this is 5, this is 6, and so on. So one can say the turnover of particular company is like it is increasing. It is increasing in every year. Means there is a profit. There is a profit getting by company become have a profit. Okay, so means there is no loss every year. The company getting profit. So this is also known as one dimensional diagram. This is also known as one dimensional diagram. Okay, and the distance between bar must be same. So the distance which I am considering here, this distance, there should be some distance between. So this distance should be same. This distance should be same. So make sure that if you're considering with 1 centimeter, you always go with the centimeters. That is also very important. So this is regarding a simple bar diagram. I hope you're clear how to define simple bar diagram, and you need to define everything like on x-axis. What is that? So you can call on x-axis we have a year, on y-axis we have, we can say, profit or turnover, whatever you call. Okay, so you can call profit, etc. So we have profit in crores, and maybe you can put some bars like this. You can put here dot if required. Otherwise, if it is not required, you it is not necessary. It is not necessary. So this is called as a simple bar diagram. But what happen if the data, if your data become more than one variable? If we have more than one variable, then what happens? So if we have more than one variable, the bar of different sets are drawn adjacent to each other. The bars are drawn adjacent to each other, and the height of bar proportional to the value. And the distinguish between adjacent bar and different colors and pattern are used. So for example, if I have a data like this, suppose
we have a year here. So this is your dependent variable. So year is having some worth and profit. Year having net worth and net profit. So I may say this is my data for worth and this is my data for profit. This is for 2005. Again, I have some vertical. I'm just taking random bars. This is 2006. So I will give this pattern. I will give this pattern. So here I have to say. Here I have to say. This data is basically for net worth, and this is the blank data which is for net profit. And everything you have to define here. Everything you have to define. What is this? This is like I can say profit or production, whatever you call. So on x-axis, on y-axis, everything we need to write it down clearly and understand. Okay. So this is regarding the multiple. So when you talk about more than one variable, when you talk about more than one variable, we always go with the multiple bar diagram. Now there is another technique. If we have a multiple bar diagram, one can go with subdivided also. But how you identify between multiple and subdivided? That's a very there is a very minor change in that divided or subdivided or multiple. What is that thing? Okay, that is called subdivided or segmented bar diagram. So either you say segmented bar diagram or you can call subdivided. Both the meaning is same. If your variable, if your variable, understand that. Read. Be careful. Okay, a variable divided into two or more components. See, here I was talking about more than two variable. Here I'm talking about more than two variable. Here I'm talking about two or more components. Two or more components. Now components can be variable. Components can be variable. See, if you think like let's say I have a components of, for example, like different expenditure, right? So I will say food, clothing, rent, education. They are all considered to be the variable, or I can say this components. Then bar are subdivided, and we can use simple bar diagram. But understand, bar is subdivided into different components, and each component occupy the paths proportional to the shared to the total. So very important concept is that total is given to us. Total is given to us in subdivided bar diagram. Make sure that. Okay. Different colors and the pattern are used to distinguish the different components, and so we can define different components if I say, suppose I consider we have family A, we have family B. So family A is using all foods. I will say first one foods. So this is foods. This is rent. Sorry, clothing. This is rent. This is education, and the last one is others. So I need to define. This is your I can say this is your first one food. This is like V is called clothing, and so on. So this is my family. This is my x-axis. This is my y-axis. Means we need to define everything, even the scale also. Here we have to define scale also. So what scale we are considering here? 1 centimeter is equal to how much you consider. That you can consider according to data. Okay. Only the thing is that this subdivided sometimes converted to the percentage also. So that is called percentage subdivided bar diagram. तो उसमें इसमें डिफरेंस क्या होता है कि we need to convert this data actual number into percentage. अब मुझे मालूम है
कि आई विल से 95% स्टूडेंट्स को परसेंटेज निकालने आता है, क्योंकि आपने परसेंटेज निकाला हुआ है आपके रिजल्ट में। तो अगर मेरा इतना नंबर आता है फिजिक्स में या फिर मैथ्स में, कितने में से तो कितना परसेंटेज होगा, तो दिस अपॉन दिस मल्टीप्लाई विथ 100। So if I say 3000 divided by 10,000 into multiply by 100, I may get the percentage in terms of family A, and so on. So once we get the percentage, we need to plot percentage data. तो percentage बोलेगा तो percentage तो 100% ही होगा. It is always 100%, right? But if you take actual number, it can vary. दिख रहा है यहाँ पे? It can vary. बट अगर मैं डेटा कन्वर्ट कर दूंगा परसेंटेज में, तो ए भी 100 हो जाएगा और ए भी 100 हो जाएगा। तो आपका जो बार होता है यहाँ पे, वो बार सेम होगा। यही डिफरेंस है परसेंटेज बार डायग्राम में और आपके एक्चुअल डेटा। So always remember, in subdivided bar diagram you have given total, means you are sharing the your food, clothing, rent from the total, okay. And if it is asking like percentage subdivided bar diagram, so you need to convert this actual data into percentage data. That much difference is there, otherwise your diagrams are same. This is the basically three types of diagram. Now one another we have a pie chart. So pie chart and subdivided, there is not much difference. Only the thing is that there also we have component, here also we have a component, but here we convert the data in terms of degree, angle. We need to convert the data in terms of angles. So we need to calculate the in terms of angle. So suppose the pie chart represents, a pie chart is a circle. You have to always represent in a form of circle of a total value of variable. The total value is given to you. Total value, this is total is 360. The angle becomes 360. And the circle is divided into number of sectors. So it is divided into number of sectors. So this is some sectors like that. And these sectors are such that their area is proportional to the value of function. So this is proportional to the first one. Let's say this is A, this is B, this is C, this is D, according to the values. And the angle of sector is proportional to the value of component. Meaning is same. That is, you can say whether you say the area is proportional to the this components or angle of sector proportional to the value of component. So what? How to get these angles? The formula for angle: value of the component, matlab 56, divided by total value, which is 100, multiplied by 360. Okay. So it's like a percentage. So if you can, how you convert the data in terms of percentage? You you divide you divide the data by total. You divide the data by total, and then you multiply by 100. But here you need to multiply with 360 because you are converting the data in terms of angle. And one can use a D, and one can just draw the angles, but you can see the total is coming 360, right? So here we have to use all the instruments like scale, pencil, everything. So I hope everybody have their own uh, compass box we called, and in that we have pencil, eraser, D. Okay, so one can use it that, and one can go with the problem of solving. Yes, any question so far? Let me know. If you have any question related to simple bar diagram, multiple, subdivided, or pi, let me know. Otherwise, I can go on. सर वो पार डायग्राम वापस बताओ ना, पार वाला। अच्छा, पाई वाला, ओके। पाई और सब डिवाइडेड में उतना डिफरेंस नहीं है। पाई चार्ट में क्या होता है, आपको एंगल्स निकालना पड़ता है। यू नीड टू कैलकुलेट एंगल्स। तो एंगल्स कैसे निकालोगे? डेटा आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि कोई कंज्यूमर क्लासेस है और उसका प्रोडक्शन ऑफ सोल्ड है।
तो एक क्लास में 56 यूनिट वो लोग सोल्ड करते हैं, तो उसको आपको एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 56, so how we can calculate according to for this data, so 56 divide by 100 multiply by 360, कैलकुलेट करो और आपका आंसर क्या आता है? देखो 210 आता है क्या? जस्ट चेक इट, राइट? सो इट इज कमिंग। सो आप एक बार एंगल निकाल लेंगे फॉर ईच क्लासेस। तो क्या करना है, आपको सर्कल बनाना है, सर्कल बना के आई नो this much area is 90, right? From I know total is 360, तो इतना पोर्शन कितना होगा आपका? 180, दिस पोर्शन इज 180, तो इतना पोर्शन कितना होगा आपका? 90, राइट एंगल। सो मुझे कितना निकालना? 201 निकालना है, तो 180 इतना हो गया, 200 कहाँ होगा? अप्रोक्सीमेट यहाँ तक होगा। तो ये जो पोर्शन है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पोर्शन मेरा ए होगा। नेक्स्ट पोर्शन मेरा क्या है? 104, तो आपको डी यहाँ पे रखना है और यहाँ से 104 काउंट करना है। तो 104 कहाँ पे आएगा? अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा। सो दिस इज योर पार्ट बी। फिर डी यहाँ पे रखना है और 46 निकालना है, 46 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होगा, तो ये होगा सी। और फिर आपको फाइनली रिमेनिंग पार्ट इज डी। और यू कैन पुट लाइक ग्राफ। ये मेरा आई कैन से ए इज लाइक दिस, B is like this. This is your B. This is your C, and finally last one is the D, like that. Okay. So this is the way you can draw the pie chart. Yes. Any other question? Any other question is there? Anyone? No, sir. Okay. So what we will do now? I'm just opening that list of questions. List of questions. Okay. You need to use the concepts of bar diagrams and start doing the calculation. So I'm just sharing that screen. I just wanted to know, first of all, which diagram we are going to use for which problem. That is our task. First we need to understand कि कौन सा diagram हमको use करना है. Okay. So and then I hope everyone can able to draw the diagram. There is not much I can say it's a very difficult task for us. One can very easy to draw it because that is all you have done it in your you can say under HSC level or SSC level. So let us see. So this is the example we have given. Yes, let me know. First question. First question Simple is bar diagram, sir. yes, simple Simple part. bar diagram. Yes, because we have given the rainfall data, right? We have given the rainfall data for uh, different years. So we have given one variable which is rainfall. So the first question is based on simple. Acha, this I cannot write here. So the first question, let me just copy this question in that. I cannot. So I will say it is from practical number 4, data representation 1. So we have here question number 1 now in front of you. We have a solution here. Yes.
So let me know this first of all. Which diagram? You are saying it is simple Simple bar bar diagram. diagram. So I will use even subdivided is there also. So we can use simple bar diagram. Simple bar diagram. So one can very easy to draw, no problem. What about second one? What about Subdivided bar diagram. Subdivided percentage bar diagram. subdivided percentage or Percentage. percentage subdivided bar diagram? Yes, sir. So it is percentage subdivided bar diagram. It is not subdivided percentage. Sub percentage subdivided bar diagram. So the following data gives the information regarding the successful candidate appearing in a certain examination, and present the data in suitable diagram. Okay. So how you present it? How you present it this data? कैसे draw On करते x axis sir classes 1 2 3 लेंगे. हैं? हाँ? On x axis sir classes 1 2 3 लेंगे. Classes 1 2 3 लेंगे और X axis पे and y axis पे सब percentage दे रहेगा 10 20 30 up to 100 and college and base मतलब ऊपर नीचे से क्लास 1 में जैसे रहेगा तो 67 and 33 तो 67 पर कट मारेंगे मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. नीचे वाला से 67 एंड ऊपर वाला 33. अच्छा तो ओके नीचे वाला से उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे स्केल में कि वो कॉलेज ए के लिए है एंड सेकंड डायग्राम में तो स्केल रिप्रेजेंट कर देंगे कॉलेज बी के लिए है. अच्छा अभी मेरा क्वेश्चन ये है you know it is now subdivided bar diagram, right? You know it is now subdivided bar diagram, but uh, can you tell me somebody saying that I can take x axis pay on x axis we can consider uh, you're saying it is classes, right? You're saying it is classes. Okay, but is that classes will be like okay? Is that classes will be okay? Class sir class 1 2 3. Yeah. So we need to give the means I will say I can say on x axis use some bar is there or not? So I will say like this. I have this data and right, and we have class 1, class 2 and class 3. So class this is 100%, right? I can say 10, I may say 20 40 like that. You can go with 10 because 10 बड़ा हो जाएगा तो you can take 20 40 60 80 like that. Okay, so you can take up to that number, whatever number is coming. So let's say 100 is here. So everywhere the bar size will be same. Now distance between this and this must be same. Okay, so you need to draw properly data. And in the first case it is 67. 67 कहाँ पे आएगा? Approximate. This is 70. So I will say approximate 67 will be here. So this data is basically your
college 1, and the remaining data is college 2, or college A or B, whatever there is. Okay, so this is the problem which you have to solve according to the data. Okay, so that is nothing but your subdivided bar diagram. Similarly, one can go with another example like 77%. It will be somewhere here, then 70% means somewhere. Okay. Now we have to write down name of diagram. कैसे लिखना है क्वेश्चंस आप, कैसे क्वेश्चंस आपको लिखना है? तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले name of diagram, which is percentage subdivided bar diagram, and we have to define title. What is title? It's a information. See, the title is given. I think everybody know how to write title because we have seen all in the unit 1. So what is the title? It's a information regarding successful candidates appearing at a certain professional examination. ये आपका पूरा title होगा. This is the information. I'll press it. Let's see whether I can press it. So this is my title. Okay, I have to write it down because it's थोड़ा सा odd. So that is information regarding the successful candidate appearing at examination. So we need to define first one name of diagram, second one title, and then we need to draw the diagram. These three things we have to consider thoroughly, and we have to define here x-axis, y-axis. X-axis we have a classes, and y-axis we have percentage of students. Okay, you may write the percentage of students. Is that clear to all students? What we Yes, have to, sir. everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. In, in anyone I hope. having any difficulty in this problem, because the format or pattern we have to use like this for all remaining problems. Anyone like who has joined late or who has not understood anything, I will repeat. If not, so let me define third example and let me No know. problem, sir. Yeah, No good. problem, sir. Yes, very good. Let's see the next example. Now tell me here which diagram we are going to use. Now see, in the problem it is given we have to use percentage subdivided diagram. तो problem solved हो गया, problem solved हो गया. But देखो इसमें mention नहीं किया है, तो अपने को properly use करना है कि we have to use whether we have to use multiple or we have to use percentage. Since percentage is given, तो problem solved हो गया, right? And even total is given. See यहाँ पे percentage दिया है, but one can draw multiple also. कैसे? अभी कोई बोला बच्चा मैंने मल्टीपल ड्रॉ कर दिया सर, क्योंकि टोटल तो दिया ही नहीं है, बट टोटल बाय डिफॉल्ट इट इज 100%. टोटल बाय डिफॉल्ट इट इज 100%. So suitable diagram is your subdivided, percentage subdivided. It is not multiple. Make sure that. What about here? Here they have mentioned percentage subdivided. Sorry, percentage bar diagram. Percentage bar diagram. तो अभी तुम बोलेगा अरे परसेंटेज मल्टीपल बार डायग्राम तो पढ़ा नहीं हमने, बट यू हैव स्टडीड
मीन्स डेटा कैन बी कन्वर्टेड इन परसेंटेज एंड वन कैन गो विद दैट. बट अभी फिर से क्वेश्चन यहाँ पे आता है. अच्छा, now can tell me, anyone can tell me which diagram we have to use? Name of diagram. Yes, Percentage subdivided bar diagram. percentage. Subdivided bar diagram. Okay. Previous वाले से. So फिर से अपने को परसेंटेज सब डिवाइड बार डायग्राम बनाना है, लेकिन क्या लेना है? What we have to consider? On x-axis, what you have to consider? Family. Yes. Yes. So on x-axis, we have to define family, and on y-axis, we have to define items. Percentage items. But we have to define this data. First, we have to convert this data in terms of percentage. तभी परसेंटेज कैसे निकालोगे वो क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को परसेंटेज निकालने का प्रॉब्लम होता है. तो परसेंटेज कैसे निकालेगा? यू आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज बाय फैमिली वाइज. तो आपको टोटल निकालना है फैमिली का. तो टोटल कितना होता है देखो. 100 ही हो रहा है सर. अच्छा 100 ही हो रहा है, तो 100 हो रहा है मतलब यही परसेंटेज है आपका. यस सर. यस, मतलब प्रॉब्लम इजी दिया है. ओके, तो प्रॉब्लम इजी हो गया. तो आपको फिर से डेटा को लिखना पड़ेगा वापस से कि because you have to show the calculation, you have to show the calculation and you have to convert the data in terms of percentage. So one can go with this is percentage subdivided by. Let's go to the next example. Let me know what will be the answer for this. Yes. Can you tell me what will be the answer for this? What could be the answer? Read the problem first. Read the problem. Multiple bar diagram sir. Yes, multiple bar. अरे बहुत फटाफट बता ले रहे हो यार, कैसे बता ले रहे हो आप? वेरिएबल को देख के हाँ? वेरिएबल अच्छा, good. So this is like see this is all basically a interpretation of a data. Means अब प्रॉब्लम देखिए नहीं कि आप आंसर्स बता दोगे इसमें कौन सा बार डायग्राम यूज करना है. ये दिस इज अ टेक्निक एंड दैट इज ऑल यूजफुल इन रियल लाइफ सिचुएशन. अदरवाइज हम लोग वो सब पढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, दैट इज ऑल लाइक इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशंस करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं, डेरिवेटिव सीखते हैं, बट उसका कुछ एप्लीकेशंस अपने को आना चाहिए. We should know the applications of particular topic. Okay, so here the name of diagram is percentage sorry multiple bar diagram. Name of diagram is multiple bar diagram. अभी multiple bar diagram बनाना तो कैसे बनाएंगे? What you have to consider on x-axis? क्या लेना है x-axis पे? क्या लेना है अपने को? Country USA, China and Italy. Yes. So on x-axis we have to consider तो x एक्सेस पे लेना है अपने को कंट्री और y एक्सेस पे लेना है अपने को आई कैन से रेट और बर्थ रेट और रेट आई कैन से. एंड देन यू कैन गो अहेड विद दैट. सो कंट्री में अभी तो इसमें मल्टीपल बनाना है तो कुछ डेटा रहेगा आपका. आई एम जस्ट टेकिंग रैंडमली सम डेटा यू नीड टू शो. सो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा लाइक सब लाइक दिस मे बी वन अदर. So these bars I am taking randomly. Huh? Don't we feel like कि सर अरे सेम बार कैसे आ गया मेरा, ऐसा हम मत सोचो. ओके, so randomly I am taking some bar. You can say थोड़ा बड़ा वाला. Don't get confused later on later sessions. So this representing I think birth death rate and this representing birth rate. So this is the way you have to draw for next time.
Now can you tell me this one, next one? Which diagram you have to use? Yes. पाई डायग्राम दिया है ना सर? Pie diagram, sir. Yes. Because it is given, the problem is solved. अगर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं दिया होता तो क्या करते? बोलो। सिंपल बार डायग्राम भी बना सकते थे एंड बार डायग्राम पाई डायग्राम भी बना सकते थे पाई से। हाँ हाँ, बट जनरली क्या फॉलो करोगे? सिंपल बार डायग्राम। क्यों? सर आइटम्स दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, अगर कोई तो आइटम तो एक वेरिएबल हो गया, बट ध्यान से देखोगे तो ये जो वेरिएबल्स हैं, ये दे आर ऑल रिलेटेड ना बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? तो पाई डायग्राम विल बी मोर सुटेबल देन सिंपल बार डायग्राम। आर यू गेटिंग? अगर पाई डायग्राम नहीं भी दिया होता तो भी आपको पाई डायग्राम ही इसमें जनरली बनाना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो सब लिंक्ड है। इट इज एवरीथिंग इज लिंक्ड, everything is a link and they're all components. Can you think it is component? सब component ही दिख रहा है आपको। Education is a component, rent is a component, clothing is a component. Are you getting my point? So इसीलिए थोड़ा सा क्या होता है मालूम है, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश में प्रॉब्लम होता है सिंपल और पाई में। ये आप कंसेप्ट याद रखो। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, नेम ऑफ डायग्राम विल बी पाई चार्ट and everybody know how to draw the pie chart, so no problem at all. And next one we have see the next one. Let me know what is next one. I think next one is also given. तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इट इज ए परसेंटेज सब डिवाइड बाय ऑलरेडी बोल चुका है आपको, ऑलरेडी बोल चुका है। लेकिन आप परसेंटेज निकालोगे कैसे? क्लास वाइज निकालोगे कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाइज निकालोगे? क्वेश्चन वही आता है। हाउ डू यू कैलकुलेट? क्लास यस, वाइज निकल। हाँ, परसेंटेज क्लास वाइज निकालना पड़ेगा बेटा, आपको याद रखो। हम लोग बोलते हैं ना कि ये फर्स्ट ईयर में कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स पास हुए, या फर्स्ट ईयर में कितने कितने फर्स्ट क्लास है, कितने सेकंड क्लास है, कितने थर्ड क्लास है। क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंटेज अपने को फर्स्ट क्लास वाइज निकालना है, सेकंड क्लास वाइज निकालना है। नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज बाय यूजिंग द कॉलेज वाइज। हम लोग बोलते हैं ना कॉलेज में 98% रिजल्ट आया, एक कॉलेज में 100% रिजल्ट आया। हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या, फर्स्ट क्लास आया है कॉलेज में? ऐसा नहीं बोलते हैं। तो पर्टिकुलर कॉलेज में कितना परसेंटेज आया है वो कंसेप्ट बताना है। तो परसेंटेज प्रॉपरली निकालो और परसेंटेज का डेटा यहाँ पे साइड में लिखो, या फिर आप नया टेबल बनाओ, उसके बेसिस पे निकालो। तो थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो एनी वन लाइक एक डेटा का, तो मुझे आप बता दो, आई विल क्रॉस चेक इट। तो आई थिंक टोटल कितना आता है इसका? 400 आता है क्या, 4000 आता है क्या? चेक करो। सर 4000 और सर फर्स्ट क्लास में कॉलेज का 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30, करेक्ट। 30 आ रहा है, करेक्ट। एंड सो ऑन। तो 30 आएगा, तो 30% आएगा, और 42.5 आएगा, और 27.5 आएगा। तो these entries I am giving so that you can this is for college A. Similarly one can compute for college B. college B में कितना आ रहा है? 32.5, 35, 32.5, and once you have computed rest thing you can do. तो रेस्ट थिंग फिर से आपको परसेंटेज ही बनाना है, तो परसेंटेज तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कैसे करना है, क्या करना है। Try for next one. Check whether you can do it. कौन सा बनाएंगे बोलिए? Don't get confused. Think it and then tell. Multiple. Everybody is agree. Multiple. Everybody is agree. सब डिवाइड हाँ, कैसे बोलो? सब डिवाइडेड कैसे रहेगा?
Is that total is given? दिल्ली का टोटल टेम्परेचर मालूम है क्या आपको कितना है, या मुंबई का टोटल टेम्परेचर मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम है ना, तो इट इज मल्टीपल बार डायग्राम. Okay, so we have to go with the always multiple bar diagram in this problem. Is that clear? Why multiple? Somebody is saying ki subdivided, so it is multiple, it is not subdivided. Yes, sir. Got it. So whenever it is a total percentage given or total concepts is given, we always go for subdivided. Try for this one. Let me know. मल्टीपल बार डायग्राम, Huh? मल्टीपल बार डायग्राम 3 बार्स का कॉम्बिनेशन रहेगा. हाँ. But अगर मल्टीपल की वजह से सब डिवाइडेड किया तो क्या प्रॉब्लम होगा? हाँ सर, सब डिवाइडेड भी सही मतलब. हाँ? हाँ सर, सब डिवाइडेड भी हो जाएगा. क्यों नहीं हो जाएगा? वो प्रॉब्लम नहीं है, होने का तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कौन सा मोर सुटेबल है, दैट इज इम्पोर्टेंट. विच वन इज मोर सुटेबल विथ अदर, दैट इज अवर क्वेश्चन. अच्छा, कभी अगर ऐसा बोलते हो क्या, आप थोड़ा सोचो, यू हैव टू डू लिटिल बिट चिंतन, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग. ओके, कैन यू से 2004 में आर्ट्स के बच्चों को 500 मिला था, ऐसा बोलते हो कभी क्या आप लोग? मतलब अगर वो डेटा आप मल्टीपल में अगर एक्सप्रेस भी करते हो तो इट हैज नो मीनिंग. आई थिंक देयर इज नो मीनिंग एट ऑल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वन कैन express this data in terms of percentage subdivided by diagram or subdivided by diagram. Getting my point? यस सर. तो अभी परसेंटेज सब डिवाइड करना है कि सब डिवाइड करना है, ये क्वेश्चन आता है. मतलब मैं, परसेंटेज बेटर. हाँ मतलब नाउ आई एम श्योर कि मल्टीपल तो का मल्टीपल का कुछ मीनिंग नहीं. मल्टीपल हैव नो मीनिंग एट ऑल, बिकॉज आई विल नॉट से 8 स्टूडेंट्स को 2004 में 500 में क्या मिला था. 500 ये क्या होता है? आई डोंट नो. द नंबर विच 500 रेफरिंग, इट डजंट मीनिंग, इट हैज नो मीनिंग, राइट? बट तो मतलब मल्टीपल तो कैंसिल हो गया. मल्टीपल कैंसिल मीन्स नाउ वी हैव टू गो टू द सब डिवाइडेड. अभी सब डिवाइडेड में 2 कंसेप्ट्स है, परसेंटेज और सिंपल. अगर मैं सिंपल भी एक्सप्रेस करता हूँ तो सिंपल में भी तो कुछ कंसेप्ट नहीं दिखेगा, it has again no meaning. So we have to go with percentage subdivided. Is that clear? Yes, everybody? Yes, sir. Any question? So this is your practical number 4, which is diagrammatic presentation 1. So you can just take down today's date. So I'm just sharing the feedback, not feedback, that is called attendance sheet for today's practical. And you just fill it now. उसका मूड जब करता है तब बोलने लगेगा. लिंक भेजेगा, आप अटेंडेंस लगा दो, लिंक भेजेगा चैट में. The chat is disabled. It is disabled. Just a minute. आपने लिखने वाला उसमें नाम लिखो, फिर आपको मैसेज आएगा, हाँ आपने अटेंड किया. अरे वो म्यूट करो ना, किसका है वो? गेटिंग मी लाइक जस्ट म्यूटेड. व्हाई चैट इज डिसेबल? बिकॉज मैंने कुछ नहीं किया वहाँ पे. स्टार्टिंग से डिसेबल्ड है. जब मैं लगा दूँ
चला गया ठीक है, तो किसी ने किया रहेगा शायद, वो सिस्टम में जाके चेक करना पड़ेगा. एनीवेज आई एम शेयरिंग दैट form that you can focus mainly. पेपर देने तो पेपर में तो पास होने ही नहीं होगा, स्केट ही लगेगा. ऐसे ही होगा. देखो अभी कितने लोग हैं पता है. So I hope you can able to see the at least chat box. Chat box आप देख सकते हैं. See, I have shared this uh, link for that. You Yes, fill sir. it now. Received. Yeah, you fill it now. You need to select a practical name properly. I think I have given the practical name also in that trigonometric 1 or 2. Is that there 1 or 2 something like that? Just consider trigonometric practical number 4. Just take practical number 4. But that is actually converted to practical number trigonometric 1. Okay, but that's okay. You can take trigonometric presentation in this time. Next time you take trigonometric 1. So the majority students like they are attending these practicals and everything. So make sure that today's date we are conducting this practical. So you have again 1 week from today onward. Okay. So Sir, complete it. timing 1 o'clock is okay. 1 o'clock is okay. So you fill that form, and I think we'll see on next class we have I think on Tuesday. So Tuesday or Wednesday we'll meet on Tuesday. Yes, any question is there? Sir, Sir, for Yes. practical 4, what is the last submission date? So, So today मतलब- onward 7 days. okay. So 21. Let me see the time. Yeah, 21. Practical link is not clickable. Sorry. Sir, the practical links you have given, it is not clickable. What query you are getting there? तो प्रैक्टिकल लिंक काम नहीं कर रहा, मतलब yes, ब्लैक हो sir. गया, ब्लू लिंक क्या रन बोल रहे हो? क्या बोल रहा है मतलब? The site can't be reached. साइट कांट बी रीच मतलब बेटा आपके ब्राउजर में कुछ इश्यू है, ऐसा प्रॉब्लम है. साइट कांट बी रीच का मतलब क्या होता है कि आपका जो ब्राउजर है ना वो उसको ब्लॉक कर रहा है, तो आपको आपका ब्राउजर रीसेट करना पड़ेगा. ठीक है, या फिर बहुत सारे टैब्स अगर आपने ओपन किए हैं, जस्ट क्लोज ऑल द टैब्स एंड एवरीथिंग, or otherwise you restart your cell phone. Means there is some technical problem with your cell phone. Means all sites are working, no problem. सर प्रैक्टिकल 3 और प्रैक्टिकल 4 का दोनों का लास्ट डेट 20 है. Now you have to see, I don't know. सर 3 का 20 और 4 का आज अगर पकड़ेंगे तो 21 हो ही जाएगा. Correct. कल ही दिया था ना आपने Yes, प्रैक्टिकल 3 yes. Anyway, so we'll meet on the next class and we can discuss more. Okay, sir. Thank you. Yeah, Shraddha, you have any question? यस सर. सर Yeah. नेक्स्ट लेक्चर का ना आप एक बार रिवीजन ले लेना सर, किसका? इसी का Diagrams. हाँ, तो हाँ diagrams का सर. हाँ. Yes sir. Okay, no problem. But you can download this GC notes. You can download this diagram ka notes on from the GC. Okay, and ओके. start. Sir, हाँ बेटा बोलिए. I'm not getting the link. You're not getting the link. From Yes. where? अभी तक किधर थे आप फिर? Sir, it's showing that a site can't be reached. अच्छा, और किसी का ऐसा दिखा रहा है क्या? क्योंकि काफी लोगों का रेस्पॉन्स आया मुझे. आई थिंक मोर देन 30 स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स No, आया sir. बेटा. Done, sir. डन, वही बोल रहा हूँ मैं. बेटा आप क्या करो मालूम है, वो लिंक को ना आप कहीं पेस्ट करके रखो, आपके ब्राउजर को थोड़ा सा उसको रीसेट करो और वापस से इसको लिंक करोगे ना तो. सर मैं आए. यस सर बोलिए.
यस उनको मैम। बोलो गूगल, अमोल सर गूगल हाँ क्रोम हाँ हाँ अमोल सर। गूगल क्रोम में ओपन करने को बोलो उनको। बेटा गूगल क्रोम में ओपन करो, देखो आपको प्रॉब्लम शायद नहीं होगा, ठीक है, बट अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो डोंट वरी, आपका नाम बोल दीजिए मेरे को, आई विल नाम लिख के रखता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप फिल करो। ओके सर। ओके ठीक है अमोल सर, यू कैन कंटिन्यू बिकॉज एक नेक्स्ट क्लास करेंगे जो भी रहेगा यस हमारा। यस हाँ यस ओके सर। हमारे या तो बच्चे सर हैंडफुल बच्चे हैं, यस तीन सारे यस रहेंगे। यस सर, यस सर, यस सर। ओके 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 बाय ओके, बाय, गुड। या बाय।